तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि 5G फ़ोन के बारे में जो कि Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है Mi 10। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बेल आइकन को भी आप ऑन कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ न्यूज़ निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से कि 5G फ़ोन आ गया है Xiaomi का और लॉन्च हो गया है। और इस फ़ोन के बारे में हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि कितने प्राइस तक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि Xiaomi 20,000 से लेके 15,000 तक के फ़ोन ही लॉन्च करा था, तो इसका प्राइस तो बहुत हाई है। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस। H65, which is Qualcomm's current flagship chipset, and it also supports 5G networks. And at the back, we have some of Mi 10's highlight features such as 8K video recording, the Snapdragon 865, an HDR10 Plus supported display, and of course the 30-watt wired and wireless fast charging support. Now, time to break the seal and see what's inside. Okay, first up is a little white box, and inside we have the SIM eject tool on the top. Next, we have a USB Type-C to 3.5mm headphone adapter, since there's no headphone jack on the Mi 10. We also have a quick start leaflet, and finally a silicone case for the phone itself. Now let's keep these things aside and let's dig in further. Finally, we have the Mi 10 5G itself. So let's pop this out of the box. There we go. This is our first look at the Mi 10 5G. Now let's quickly take it out of the plastic wrapper. Let's keep it aside and check what else is left in the box. We have a USB Type-C cable, and finally the 30-watt fast charger, and that's pretty much it. With everything set up, let's take a closer look at the display. It has a fairly slim chin at the bottom, also towards the sides, and coming to the top we also have the 20-megapixel selfie camera in the hole punch cutout. The display is a 6.67-inch Full HD Plus AMOLED panel with a 90Hz refresh rate and HDR10 Plus support. It also has an in-display fingerprint sensor. Now at the bottom there's the speaker, we have the Type-C port and the dual SIM tray. And coming to the top we have the earpiece cutout for phone calls and another cutout on the top for the second speaker for stereo sound. There's also an IR blaster here. Over to the right we have the volume rocker and of course the power button. Now, the phone feels very premium thanks to the glass back. This is the coral green color variant, but it's also available in a twilight grey shade. Now, let's take a closer look at the cameras. The 4 on the back includes the primary 108-megapixel sensor, a 13-megapixel wide-angle camera, a 2-megapixel depth camera, and a 2-megapixel macro camera. The Mi 10 5G runs MIUI 11, which is based on Android 10. It's powered by the Snapdragon 865 chipset, and the unit we have has 8GB of LPDDR5 RAM and 128GB of UFS 3 storage. Xiaomi does offer another version with 256GB of storage as well. The Mi 10 5G also has a 4780 mAh battery with support for up to 30-watt wireless charging and up to 10-watt reverse wireless charging. तो जैसे आप लोगों ने देखा इसकी अनबॉक्सिंग और इसके फ्यूचर के बारे में, तो इसका प्राइस 50,000 तक का है। इतना महंगा फ़ोन, 50,000 का फ़ोन Xiaomi का। आप अगर सोचोगे कि हाँ 50,000 का फ़ोन हम EMI का Xiaomi की तरफ से ख़रीदें, आप तो सोचोगे ना 50,000 खर्च करना है तो हम आईफोन ही क्यों ना ख़रीद लें। तो ऐसे ही है दोस्तों, अगर आप ये फ़ोन परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो 50,000 तक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो चैनल पे, और कमेंट कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना कि आपको ऐसी वीडियो वगैरह नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो इतने ही था वीडियो में। तो ओके दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।